On World Telecommunication and Information Society Day, we celebrate more than just technology. We celebrate a lifetime, connecting people, bridging divides, and powering inclusion across every corner of India and the world. Did you know, in 2024, 97% of economies have closed over 60% of their gender gaps. For the first time since 2020, women are adopting mobile internet faster than men. Digital tools bring healthcare, education, and banking to millions, quickly, securely, and affordably. 29% of the global STEM workforce is now female, 40% in India. Innovation has no gender. Women-led tech startups raised $29.6 billion globally in 2024. Ideas powered by telecom. Growth powered by inclusion. Let's listen to women from diverse backgrounds and discover how telecom powers their dreams. डेली लाइफ में हमारे बहुत सारे बदलाव आ गए हैं, जैसे कि पहले तो था कि ज़्यादातर हम सेलिंग नहीं कर पाते थे, बट ऑनलाइन होने पर, वेबसाइट पर डालने पर, फेसबुक पर डालने पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वो भी हो रहा है, सेलिंग भी हो रहा है. Mobile learning has made it accessible for me to learn right through my own room, and I don't have to go to any place or pay any extra for the transportation fee or anything like that. I can just learn in my room. With fast internet and mobile phones, I can easily send study materials and videos and homework to my students, and it has also helped me find useful teaching content quickly. नेट से नीट पर सहायता मिलती, हमको क्या सभी तो मिलता है, उससे जानकारी मिलती है, फसल का रोपने का सही खाद भी, कब पानी देना है, कब बीज लगाना है, उन्नत किस्म की बीज की कभी पता चल जाता है. इस तरह के नेट से बहुत फ़ायदा चलता है. पहले तो मैं कैश लेती थी, पर अब अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की वजह से मेरा सारा काम यूपीआई पेमेंट के थ्रू होता है. और पहले इकट्ठा करना कैश मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाती थी, बट अब एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन और यूपीआई पेमेंट की वजह से सारा पैसा एक ही जगह आता है, जिससे मुझे बहुत मदद और सहायता होती है. Let's listen from Lieutenant General Dr. S.P. Kochhar, DG COAI, as he shares his vision for gender-inclusive digital growth in India. It is very important for us to acknowledge that the digital transformation that is going on in India, especially because of telecom, is empowering women and bridging the digital gender divide as never before. With the rise of digital platforms and mobile networks, more women are accessing flexible work, starting online businesses, and gaining financial independence. This World Telecommunication and Information Society Day, we celebrate the connection that empowers. Here's to a future where opportunity is just a connection away. Happy World Telecommunication Day.